Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss plasma membrane. So let's move to the whiteboard. So plasma membrane. Very important topic regarding long question, short and MCQs as well as from anti-test point of view. Very important topic. So this one's plasma membrane. So the outermost boundary in animals and in plants plasma membrane lies just below the cell wall. Clear? So at this membrane, so it serves as a outer covering, especially in the animal cells, क्योंकि animal cells में जो cell wall है वो नहीं होती, इस वजह से ये उनकी outermost boundary है, जबकि plants में outermost boundary that is the cell wall, तो ये cell wall के just नीचे मौजूद होता है. Clear? The outer membrane, the plasma membrane. Clear? Now dear students, its composition. So it is composed mainly of 2 to 3 things. Number 1 are the lipids. Number 2 are the proteins. And number 3, a little bit carbohydrates. Clear? So these are the 3 major components of plasma membrane. In the plasma membrane, the lipids, they constitute 20 to 40%, while the proteins, they constitute 60 to 80%. Clear? While the carbohydrates, they are present in small amounts. In small amount. But they are the part of the plasma membrane. जहाँ तक बात है लिपिड्स की डियर स्टूडेंट्स, तो लिपिड्स भी 2 तरह के यहाँ पर मौजूद हैं. 2 कैटेगरीज, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा थे. लिपिड्स 6 क्लासेस पढ़ी थी. सो उसमें एक तो यहाँ पर मौजूद हैं फॉस्फोलिपिड्स and the second category is cholesterol. तो ये 2 तरह के लिपिड्स यहाँ पर पाए जाएंगे इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं. तो शुरू में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के हवाले से. नाउ द स्ट्रक्चर of plasma membrane. So as far as structure is concerned, many biologists, they contributed regarding the structure of the plasma membrane. But among them, there are 2 models which are frequently associated with the plasma membrane structure. The first model is
called as the unit membrane model, or it is also called as Davison-Danieli model. So according to this model, according to unit membrane model, the plasma membrane consists of lipid bilayer, which is sandwiched between two layers of proteins. So that was an old model, the initial model. So how does it look like? So what is this, dear students? I have told you already in chapter number 2 in the topic of lipids in the class of phospholipids. So these are basically the phospholipids, the lipid bilayer, clear? And over it is sandwiched between two layers of proteins. Like this, the upper layer of proteins, and over here is the lower layer of proteins. So this model is called as unit membrane model. In this, these are the globular proteins, clear? And this end is the hydrophilic zone or region, and this one also. This is hydrophilic. Hydrophilic means the water loving. And in between these two regions, there is hydrophobic region or zone.
तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर एक लेयर है प्रोटीन की, इसी तरह से नीचे एक लेयर है प्रोटीन की, और दरमियान में दैट इज द लिपिड bilayer. Clear? So it is the lipid bilayer is sandwiched between upper and lower layers of proteins. So this is called as the unit membrane model. Clear? ये short question में आपसे पूछा जा सकता है. Clear? Now the next model, which is very very important regarding the structure of the plasma membrane, which is the most acceptable model, that is the fluid mosaic model, and that is more accepted. It was presented by Singer and Nicholson in 1970s, and it is more perfect than the unit membrane model. Here, this model says it is basically the modification of unit membrane model. It is the modification of unit membrane model. According to this model, means the fluid mosaic model, the proteins are embedded between the lipid bilayer instead of making outer and inner layers of unit membrane model. Clear? So this model says that it is the modification of unit membrane model, and according to this model, the proteins are embedded. मतलब कि ऊपर ऐसे लेयर नहीं है, बल्कि लेट्स सपोज दिस इज द प्रोटीन, ये ऊपर ऐसे लेयर फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये लिपिड लेयर है, तो लिपिड के अंदर ऐसे एम्बेडेड है, धसी हुई हैं उसके अंदर, और दोनों एंड से बाहर निकली हुई हैं, ये दोनों लेयर से इस तरह से लिपिड बायलर की दोनों साइड से. क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल under the electron microscope. So it is more acceptable model regarding the structure of the plasma membrane. So how it looks like. So these are the phospholipids. Making the lipid bilayer structure. And I will also tell you why it is called as fluid mosaic after drawing this. So these are the proteins
And here is the cholesterol molecule. So this is the lipid bilayer. Another protein over here. That is and there is another protein embedded in the lipid bilayer structure. So all these are the heads of the phospholipids. Clear? If it comes in the long question, you have to draw this diagram, which has been given in our book as per syllabus. You must draw it. Otherwise, the marks may be deducted. Clear? And one more thing, that is the carbohydrates. Attached to the proteins and also directly attached to the lipids. So this is what we call as the fluid mosaic model. Of plasma membrane. Now I'm going to label it. So this one is the
ग्लाइकोलिपिड, द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यहाँ पर ऊपर लिपिड के यानी फॉस्फोलिपिड्स और उसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है। इसी तरह से यहाँ पर दैट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल और उसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट अटैच, इट बिकम्स द ग्लाइकोप्रोटीन। Clear? And these are the fibers of extracellular matrix. And this one is cholesterol. And these green fibers, these are the cytoskeleton. And basically these are the microtubules or microfilaments. And this is basically called as the integral protein. And this one is the peripheral protein. Clear? So that is the structure, and these are the phospholipids. Clear? So that is the fluid mosaic model. तो डियर स्टूडेंट्स, इनको फ्लूइड मोज़ैक क्यों कहते हैं? मोज़ैक ये बेसिकली एक पेंटिंग होती है और इसमें छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन्स और पीसेस ऑफ ग्लास और पीसेस ऑफ प्लास्टिक, उनकी एक बाकायदा एक कॉम्बिनेशन से तस्वीरें बनाई जाती हैं, पिक्चर्स बनाई जाती हैं. दैट काइंड ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड एज, और दैट काइंड ऑफ पिक्चर्स आर कॉल्ड एज मोज़ैक पेंटिंग. क्लियर? यानी छोटे छोटे पीसेस की मदद से आप तस्वीर बना दें. और फ्लूइड इन द सेंस बिकॉज कि एक तो यहाँ पर ये इसके जो नेचर है, इट इज़ फ्लूइड, मतलब फ्लूइडिटी है. इफ़ यू सी in the electron microscope, so it is like this, always moving like this, like there is something flowing or floating over the surface. तो ये fluidity है. और fluidity किसकी वजह से है, dear students? That is due to this one, that is this one, the cholesterol. The fluidity of plasma membrane is due to cholesterol. Clear? और ये उसको मेंटेन रखती है, उसके स्ट्रक्चर को भी, और ताकि आसानी के साथ यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड एज वेल एज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.